everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study India's 23 borrowing cost. तो आग लगाने वाले हैं borrowing cost को. I only request is that close all your books and listen what I am saying and watch this video till the end. So let's get started. So borrowing cost now, whenever there is a borrowing cost, whenever you take any loan and you are incurring the interest. So generally few interest that will go and sit in P&L account. You will debit that to P&L account. And थोड़े ऐसे रहते हैं कि you will capitalize that to an asset. If you are using that borrowings to construct a building or to construct a qualifying asset, then whatever interest that is incurring on such borrowing cost, that you will add to the cost of the asset. Simple. Now these are the three cases where you will actually go back and add to the asset, that is acquisition of qualifying asset, construction of a qualifying asset, and production of a qualifying asset. Now let us understand what is a qualifying asset. Take a qualifying asset matlab which takes a substantial period of time to get ready for its intended use. जो substantial period of time लेता है, that is not defined anywhere. What is the substantial period? It is not defined in the standard, but generally in ICI all the questions it is 12 months. ठीक है, वो 12 months बोल के कहाँ पे भी it is not defined. Okay, so whenever an asset, if it is taking substantial period of time to get ready for its intended use, उसको qualifying asset बोलते हैं. तो इसको बनाने के लिए if we have taken any loan, ठीक है, एंड ऑन दैट कुछ कॉस्ट इनकर हो रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट हो रहा है, तो दैट इंटरेस्ट कॉस्ट वी विल ऐड बैक टू दिस एसेट, उसके कॉस्ट में जोड़ते जाते हैं टिल इट इज़ रेडी फॉर इट्स यूज़. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. तो नाउ इट इंक्लूड्स क्वालिफाइंग एसेट्स में क्या क्या आते हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स में क्या क्या नहीं आते. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन्वेंट्री. ठीक है, इन्वेंट्री इफ इट इज़ टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम to get ready for its intended use or sale, then in that case जो भी borrowing cost हो रहा है उसके related, that will be added to the cost of the inventory. ठीक है, manufacturing plant, power generation, intangible assets, payroll plans, for all this if you have taken any loan, then interest cost will be added to this cost. And it excludes inventories. Again, inventories if it is produced in a large quantity and on repetitive basis, तो at that point of time each and individual inventory को track करने में problem होता है. So you cannot allocate the borrowing cost to each and every individual inventory if it is done in large quantity and on repetitive basis. So that is excluded. ठीक है, only inventory which is taking substantial period of time, then whatever borrowing cost is incurring, that you will add back. Assets ready for sale and then financial assets, these are excluded. I hope it is clear. तो ये चार्ट कुछ नहीं बोलता है. लाइक इफ़ यू सी डिफरेंट इंडियाज ऑल्सो, लाइक इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे भी इंटरेस्ट को अपन कैपिटलाइज करते हैं. एंड देन इंडियाज 116 लीजर्स में भी वट एवर इंटरेस्ट कॉस्ट इज हैपनिंग दैट विल बी कैपिटलाइज रेस्पेक्ट टू दो स्टैंडर्ड्स. वो स्टैंडर्ड बोलता है कि कैसा कैपिटलाइज करना. ठीक है, एंड देन दिस एक्सचेंज डिफरेंस ऑल्सो. एक्सचेंज डिफरेंस देयर इज अ क्वेश्चन, वी विल बी डूइंग दैट. तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन capitalize it as borrowing cost, to what extent we can treat it as borrowing cost. We will do a question that will be easy to understand. Okay, so this question is about inventory. ठीक है, वो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स से घी बटर चीज़ बना रहे. So this cheese or butter, that is its inventory. Now the question is, they have taken whether borrowing cost incurred to finance the production of inventories, that is cheese, borrowing cost जो incur हो रहा है, whether they can capitalize it or not. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़े तो says it will take substantial period of time, substantially longer period to get ready for its sale बोल रहा है. ठीक है, so in that case inventory के ऊपर जो भी borrowing cost हो रहा to manufacture this inventory, if you have taken any loan, ठीक है, उसके ऊपर जो borrowing cost हो रहा है so since it is taking substantial period of time to get ready for its intended sale, that will be included in the cost of the inventory. So that's how you need to write the answer. It is theory, so once check the ICA material it will be easy. So ये question है foreign exchange का. ठीक है, लेट्स डू इट. तो इफ़ यू सी वी विल डिवाइड दिस टू. यहाँ पे 20,000 लोन लिया है ऑन 1 अप्रैल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट. ठीक है, दैट इज़ अ क्वालिफाइंग एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेएबल ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है, सो दे हैव टेकन अ लोन ऑफ $20,000 5% इंटरेस्ट रेट पे. सो दिस इज 5%, 20,000 into 5%, which comes to $1,000. Okay, this is the interest cost. जो मैं $20,000 में लोन लिया so every year $1,000 I'll have to pay. Now had he has taken the loan in India only, $20,000 in India would be at that time it is 45 on 1st April. ठीक है, on 1st April it was 45. तो कितना हो रहा है 20,000 into 45. ठीक है, तो had he taken the loan in India at 45, 20,000 into 45, which comes to 9 lakhs.
ठीक है, अगर इंडिया में लिया होता तो इट वुड बी 9 लाख. सो 9 लाख के ऊपर इन इंडिया रेट इज़ 11%. ठीक है, SBI में इफ़ यू आर बोरोड ABC by ABC Limited from State Bank India local currency interest rate would be 11%. So 9 lakhs के ऊपर interest cost would be 11% which comes to 99,000. ओके, अगर इंडिया में लिया होता तो इतना इंटरेस्ट कॉस्ट होता था. तो स्टैंडर्ड भी वही बोलता है. ठीक है, कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो इफ़ यू हैव बोरोड इट फ्रॉम US. ठीक है, कितना अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं. इट इज़ equivalent to if he has taken the loan in India, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, to that extent he can capitalize. ठीक है, now on $1,000 you will have to pay year end. Now you have taken loan. year end में कितना हो गया, 48 हो गया, तो which comes to 48,000, right? तो this is interest, 1,000 is interest. now प्रिंसिपल पे भी ना चेंज हो रहा है, 20,000 से ना 48 हो गया, पहले 45 था, तो 3 रुपीज़ बढ़ गया, तो दिस कम्स टू 60,000. ठीक है, फर्स्ट 48,000 जो इंटरेस्ट है ना, to that extent you will claim, and balance is 51,000 because only 99,000 you can claim it as interest. So ये जो different exchange difference आ रहा है, so out of this 60,000 only 51,000 you can claim. ठीक है, so balance 9,000 will go and sit in P&L account. ठीक है, this 51,000 या 60,000 में 51,000 and then this 48,000 interest cost that will be capitalized to the asset. ये plant में, in this plant that cost will be capitalized. आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट्स गो. तो देखो यहाँ पे बोरोइंग्स हो रहा है, एंड देन आउट ऑफ दैट बोरोइंग, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग एवरीथिंग ऑन द प्लांट, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एट समवेयर एल्स, जो भी इंटरेस्ट वहाँ से मिलता ना, तो इंटरेस्ट इनकम को हटाना पड़ता. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दैट विथ दिस एग्जाम्पल. ठीक है, पूरा 30 lakhs बोरोइंग्स हुआ, 9% से हुआ, एंड देन देर आर टू प्लांट्स, ऑफिस बिल्डिंग एंड फैक्ट्री बिल्डिंग. ठीक है, 2 क्वालिफाइंग एसेट है. दे हैव यूज दिस 30 lakhs. यहाँ पे देखें तो दिस इज 10 lakhs, दिस इज 20 lakhs, पूरा 30 lakhs इन 2 चीज़ों को यूटिलाइज करें, बट एट 2 different डेज. ठीक है, नाउ वट एवर बैलेंस इज देयर, नो दे हैव इन्वेस्टेड ऑल्सो, रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्पररली एट 7%. ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट. सो इसका सोल्यूशन, इफ़ यू सी फर्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग का करेंगे. फैक्ट्री बिल्डिंग का देखे तो ना, इट इज़ 10 lakhs, ये 2 मिलाए तो 10 lakhs होता है. 10 lakhs इंटू 9% विच कम्स टू 90,000. ठीक है, दैट इज़ फॉर द एंटायर ईयर. नाउ लेस इन्वेस्टमेंट इनकम. ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 lakhs है ना, दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन 1 October. ठीक है, नाउ मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड हियर फॉर 7%, वो इन्वेस्टमेंट इनकम है. सो 5 lakhs लेना इंटू 7% इंटू 6 divided by 12 because it has been invested for only 6 months. 5 lakhs into 7% into 17,500 comes to 72,500. सो ये रिमूव कर दिया अपन, तो इतना अमाउंट अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं. इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आया ना, वो उसको बोरोइंग कॉस्ट में से हटा देना, तो बैलेंस शीट कैपिटलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे 20 lakhs. ठीक है, 20 lakhs के ऊपर 9% विच कम्स टू 1,80,000. ये हो गया लेस इन्वेस्टमेंट इनकम. तो इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे 10 lakhs. दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months. डोंट फॉरगेट द पीरियड. 7% इंटू 6 divided by 12. 10 lakhs into 7% into 6 divided by 12. It comes to 35,000. ठीक है ना, उसको 180 में से हटा देना, 1,45,000. राइट, सो दिस अमाउंट 1,45,000 72,500 that will be capitalized. I hope that is clear. So borrowing cost ना, it is of 2 types. ठीक है, एक specifically you will borrow cost for a qualifying asset. तो जितना भी बोरोइंग कॉस्ट होता है ना, पूरा उसको चले जाता. ठीक है, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं. और दूसरा है जनरल बोरोइंग कॉस्ट. तो व्हेन इट कम्स टू जनरल बोरोइंग कॉस्ट नो, यू हैव टू रिमूव द कैपिटलाइजेशन रेट फर्स्ट, एंड देन दैट यू शुड अप्लाई ऑन द एक्सपेंडिचर. जो भी क्वालिफाइंग एसेट को एक्सपेंडिचर होता है ना, ऑन दैट एक्सपेंडिचर यू शुड पुट दिस रेट एंड देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कॉस्ट.
Now that also we will understand with this example. तो यहाँ पे देखे तो ना these two are general borrowings, पहले से है 18% and then 16%, but 14% debentures they have taken. It was not there at the beginning of the year. It is there मतलब वो लोग 1st July को लिए, in between the year they have taken the loan. 14th December we issue the fund the construction of office building, but development activities has yet to be started. Development activities start नहीं हो तो whatever borrowing cost that they are incurring you cannot capitalize it. तो इसको लाइट ले लो. तो इसको लाइट लेना. ऑन 1st April बेटा बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट. तो दूसरा प्लांट इट हैज स्टार्टेड बिगनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बीइंग क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स. ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड दिस टू बोरोइंग्स. यूजिंग दोज टू बोरोइंग्स दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ क्वालिफाइंग एसेट. एक्सपेंडिचर देखे तो ना 5 lakhs एंड देन 25 lakhs हुआ है. ठीक है. वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए. नाउ बिकॉज दिस इज 18% एंड 16%, वी नीड अ कैपिटलाइजेशन रेट. ठीक है. वी विल फाइंड आउट कैपिटलाइजेशन रेट फर्स्ट. सो फर्स्ट सोल्यूशन 1000 so this into 18%, and then the second one is 3 into 16%. Okay, I've taken these two balances, that's it, and then I've applied the rate into 18%, which comes to 1,80,000. okay, now 300 into 16%, which comes to 4,80,000. ठीक है. टोटल मिला है तो ना 6,60,000. This is the total interest cost. Now 6,60,000 divided by total, this is 4 lakhs. We will get one rate. Okay, 1 2 3 4 divided by 4. 16.5%. Clear no? Now this is the capitalization rate. So this rate we will apply to these specific cost. Now this cost has been incurred for qualifying asset. तो 1st April को this is for 1st April 5 lakhs हुआ. तो 1st April 5 lakhs incur हुआ. Okay, now we have a capitalization rate, this one 16.5%. This is for entire year, so that's why we are not, this is 12 by 12 because it has incurred on 1st April. Now second is, if you see here 25,000 on 1st January, this is only for 3 months. 25 lakhs only, no? Yeah, so 16.5% into 3 divided by 12. 5 lakhs into 16.5% into, yes, that's it, 82,500. 25 lakhs into 16.5% into 3 divided by 12. Wow. ये राउंड फिगर नहीं आया तो वो एक कन्फ्यूजन. 3 divided by 12, which comes to 103,125 plus 82,500. So this is the total borrowing cost that you need to capitalize. Okay, 625. ठीक है. Okay, now let's go. So this is very important MCQ point of view, definitely. ठीक है. So here you should determine कि when you can actually start capitalizing. So the question is that, तो ये 3 conditions satisfy होना चाहिए. First is expenditure on the asset should be incurred, borrowing cost incur होना start हो जाना, and then activities that are necessary to prepare the asset for its intended use must have been started. ठीक है. Now let us understand that also with this. यहाँ पे देखें तो लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट. तो इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट, दिस इज लाइक बोरोइंग कॉस्ट ऑन 15th में. यहाँ पे देखो टेक्निकल साइड, एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड. एक्टिविटीज, सो दिस पॉइंट, एक्टिविटीज पॉइंट इज दिस. बोरोइंग कॉस्ट देखे तो इनकरिंग बोरोइंग कॉस्ट, सो 15th मई का बोरोइंग कॉस्ट है वो, दिस इज बोरोइंग कॉस्ट. ओके, एंड देन टेक्निकल साइड इज एक्टिविटीज पॉइंट 2nd June. सो ऑल द 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. जिस दिन वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं उस दिन से अपना बोरोइंग कॉस्ट चालू होता. एंड देन वो क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑल्सो स्टार्टेड. दिस इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट. ठीक है. प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर दैट इज ऑन 19th June. सो ऑल 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड ऑन 19th June. दिस इज द लास्ट वन. ठीक है. सो 19th June इज द आंसर.
मेरा handwriting थोड़ा खराब है, but that is the point कि all these three conditions must be satisfied. Once these three conditions are satisfied, from that day borrowing cost जो भी incur होता है that you can capitalize. Okay, these three very important. Incurs expenditure on the asset, जो qualifying asset के ऊपर expenditure चालू हो जाना, borrowing cost चालू हो जाना, and then activities that are necessary that even that have started. So technical side जो है ना वो that is the first step. Technical site planning commence. So that's the first step for any project. So 2nd June. तो तीनों में लास्ट डे है 19th जून. सो 19th जून इज़ द आंसर. So this is another concept, again MCQ point of view. So there are two types. When you are constructing a building, there is a delay. If that delay is for temporary purpose, then borrowing cost will not be stopped. ठीक है. If that delay is for a longer period, extended period of time, if it is for an extended period of time, then जो भी borrowing cost हो रहा ना, that you cannot capitalize. Clear, no? If it is for a temporary, then you can continue with the borrowing cost. So there is an example that is given in ICA material. तो यहाँ पे देखे तो ना सस्पेंड हो गया अक्टूबर से लेके जनवरी तक. So this is treated as considered to be an extended period of time. So whatever borrowing cost needs to be suspended since activities development is interrupted. So जो borrowing cost है ना that they are suspending. And then the other point is it is only for 20 days. When qualifying asset construction is about to complete, there is a temporary delay of 20 days. So that is treated as temporary. तो temporary delay के time में ना shall be continued. Borrowing cost shall be continued in case of temporary. अगर for a longer period of time हो रहा है ना, then borrowing cost will be suspended. I hope you understood this point. And then I think this is the last one, again MCQ point of view. Dividend payable on shares classified as financial liability. Now let's see, if I've given issued shares, preference shares, and whatever amount that I've collected, that I'm using it for qualifying asset, for construction of a qualifying asset. So whatever dividend that I'm paying on preference shares, that dividend will be treated as borrowing cost. Okay, simple. So provided as per Ind AS 9, that has to be treated as financial liability. अगर वो equity जैसा treat करा ना तो no, borrowing you cannot treat the payment of dividend as borrowing cost. It has to be classified as financial liability. Only then whatever dividend that they are paying, that will be treated as borrowing cost. And जो asset के लिए use कर रहे हैं ना, to that asset this cost will be added. Okay, funded to qualifying asset, right? Whatever preference shares amount that you have collected, that is funded for qualifying asset and issuing preference shares. I hope this is clear now. So that's it about borrowing cost. We have covered every topic, even from MCQ point of view. Please do watch this video 1 or 2 times and please subscribe and share with your friends. Thank you so much, guys. See you all in another video. Thank you.